खड़े, ठीक है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अपना 15वां बजट जो है वो आज पेश करने वाली है। निर्मला सीतारमण थोड़ी ही देर में बजट पेश करेंगी और ये बजट भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी लोगों की नजर जो है वो इस बजट पर टिकी हुई है और इस बजट में क्या कुछ खास होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है और मोदी सरकार का यह 15वां बजट जो है वो आज पेश होने वाला है। थोड़ी ही देर में निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। हमारे साथ इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए जो है हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बजट में क्या कुछ महंगा होगा, क्या कुछ सस्ता होगा, उसमें आम से लेकर खास और साथ ही व्यापारी जगत की खास नजरें जो है वो बनी हुई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है, सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूजा इस बजट को लेकर के लोगों के अंदर काफी उत्साह भी है। लोगों को उम्मीद है कि इस बजट से उन्हें काफी ज्यादा राहत मोदी सरकार देने वाली है। पूजा, फोन उठाने बोलो उनको। पूजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पूजा, मेरा सवाल ये है कि मोदी सरकार अपना 15वां बजट आज पेश करने जा रही है। थोड़ी ही देर में निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। इस बजट को लेकर आम लोगों में कई तरह की चर्चा भी हो रही है। इस बजट पर व्यापारी जगत की निगाहें लगी हुई है। इस बजट को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल है? वो काफ़ी खास होने वाला है और सबसे खास बात ये है कि लगभग ये ऐसा एक दिन है, आज रविवार का दिन है रेखा, और देखिए रविवार के ही दिन आज मोदी सरकार जो है एक परंपरा को शुरू से लेकर के चली आ रही है और उस परंपरा को निभाते हुए रविवार को यानी कि 1 फरवरी को हर साल बजट मोदी सरकार पेश करती है और ये 15वां उनका बजट है और आज रविवार के दिन ये पूरा बजट पेश हो रहा है। सबसे पहले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो सीधे यहाँ पर राष्ट्रपति के पास गई, उनसे मुलाकात किया और वहाँ पर जो बजट की कॉपी है उसे वहाँ पर उनके द्वारा सौंपा गया। उसके बाद फिर यहाँ पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दही शक्कर खिला करके इसकी शुभकामनाएं दी हैं नए बजट को लेकर के, जो आम बजट है उसकी तैयारियों को लेकर के, क्योंकि आज आम बजट पेश किया जाएगा। जनता की निगाहें जो है वो इस आम बजट पर टिकी हुई है और देखिए हर साल जो है वो रेलवे का जो बजट है वो अलग से पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस बार रेलवे के बजट को भी सभी के साथ मिलाकर के पेश करने की तैयारी की है। ये पूरी तैयारियां जो है मोदी सरकार कर रही है। आम बजट में इस बार कई सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। साथ ही साथ इस बार जिस तरीके से सोने और चांदी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों को भी किस तरीके से कंट्रोल में लाया जाए इसका भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। देखिए पिछली बार आम जनता को, खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली को एक सबसे बड़ा फायदा हुआ था, वो जीएसटी कटौती के रूप में मिला था और इस बार भी लोगों की निगाहें हैं कि इस बार कैसे सारी चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, इकोनॉमिक सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों ही मोदी सरकार के द्वारा मदर ऑफ डील्स जो है वो यहाँ पर किया गया है। जो ट्रेड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक शुरुआत की गई है और इस पर सभी की निगाहें बनी हुई थी और जिस तरीके से जो रोजगार है उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए, आम बजट के जरिए महिलाओं को कैसे राहत दी जा सकती है, मिडिल क्लास फैमिली को कैसे राहत दी जा सकती है, इस पर सबसे ज्यादा मोदी सरकार का फोकस रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। इस बार का बजट भी बहुत खास रहेगा। आखिर इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं ये सबसे जरूरी है और सबसे ठीक बजट पेश होने से पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मोदी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक हुई और उसमें इस बजट को मंजूरी भी दे दी गई है। तो ये सारी बहुत अलग अलग चीजें जो है वो फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है और खुद यहाँ पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी जो है वो लोक भवन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें संसद जो है वो पहुंच चुके हैं। साथ ही सीतारमण जी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रही है
तो ये सभी लोग धीरे धीरे कर यहाँ पर संसद पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई है बजट को पेश करने के लिए, और 11 बजे का समय है। संसद में भी कार्रवाई जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जो बजट पेश किया जाना है उसकी पूरी तैयारियां शुरू हो जाएगी। रेखा, सवाल यहाँ पर ये भी आपसे रहेगा, लेकिन आपसे सवाल करेंगे पूजा, लेकिन इस वक्त सीधे हम आपको लिए चलेंगे संसद में, जहां पर निर्मला सीतारमण जो है वो अपना बजट पेश कर रही हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सीधे हम आपको वही लिए चलते हैं। Of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics.
Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP,
and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product (ODOP) initiative
and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund
to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, rights have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated rights. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee
on Banking for Vikasit Bharat, High-Level Committee on Banking for Vikasit Bharat, to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth,
employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs
in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites
including Lothal, Dolavira, Rakhigarhi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness,
and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions.
I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes.
Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution.
Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees
to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap,
and minerals will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity.
critical minerals, it is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing
will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement.
and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है. बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है. सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation,
agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के उल्लेख से की और कहा कि यह बजट
देश के लिए शुभ अवसरों के बीच पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा दिखावे की बजाय जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और हर निर्णय में आम लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है और आज के बजट में भी आम लोगों को ध्यान में रखते हुए ही बजट तैयार किया गया है। इस बजट से आम लोगों को जितनी उम्मीदें थी उस पे कई ज्यादा जो है ये बजट खरा उतरेगा जब इस बजट की घोषणा हम करेंगे। ऐसी बातें निर्मला सीतारमण ने कही और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार सुधारों से तेज आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि सरकार द्वारा किए गए लगातार आर्थिक सुधारों और नीतियों के परिणाम स्वरूप देश ने 7% की उच्च विकास दर हासिल की है। विकसित भारत की ओर अग्रसर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अब विकसित भारत की दिशा में विश्वास से भरे कदम आगे बढ़ा रहा है और यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसके अलावा मंदिरों वाले शहरों के विकास के लिए भी सरकार सहायता देगी। ऐसे शहरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेगी। ये बातें उनकी ओर से कही गई है, यानी कि कई सारी योजनाएं तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ सौगात इस बजट में लोगों को दी गई है। हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन पूजा से चर्चा से पहले हम निर्मला सीतारमण की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने बजट के दौरान कही है वो आपको सुनाएंगे और उसके बाद अपनी सहयोगी पूजा के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. तो निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है और बजट पेश करने के साथ ही शेयर बाजार में भी जो है वो हाहाकार मच चुका है और इसको लेकर के कई सारी जानकारियां भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन बजट में क्या कुछ खास है ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपनी सहयोगी पूजा के साथ। और पूजा, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो बजट है उसे आम लोगों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जिसमें आम लोगों को कई सारी राहत भी दी गई है। रेलवे से जुड़ी कई सारी सौगातें जो है वो आम लोगों को दी गई है और इसके साथ ही कैंसर की दवाइयां जो है वो भी भारत में सस्ती हुई है। एक बार विस्तार पूर्वक इस बजट के बारे में दर्शकों को बताइए कि उनके लिए क्या कुछ खास है इस बजट में। ये बात है कि यहाँ पर जो पूरा आम बजट यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पढ़ा गया है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रेलवे को एक विशेष सौगात के रूप में जनता के बीच प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 7 राज्यों में हाई स्पीड यहाँ पर रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। दिल्ली से वाराणसी, मुंबई, पुणे और साथ ही कई अन्य राज्यों में भी इसका पूरा का पूरा विशेष पैकेज जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा था। बजट से पहले जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि रेलवे इस बार कुछ खास रहने वाला है, तो वो रेलवे का एक बहुत अच्छा पैगाम जो है इस पूरे बजट में देखने को मिल रहा है। जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर तैयार किया जाएगा वो आम जनता के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। दिल्ली से वाराणसी जिन लोगों को जाना है वो काफ़ी जल्दी आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे को और आसान करने का प्रयास किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है
है वो रेलवे की ओर आगे बढ़े। जो पुरानी एक थॉट प्रोसेस थी रेखा कि रेलवे लोग जल्दी नहीं जाते थे क्योंकि बहुत टाइम लगता था, बहुत आराम से ट्रेन जो है वो चलती थी, ये सारी वजहों से कहीं ना कहीं लोग जो है वो हवाई यात्रा पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और हवाई यात्रा से इस बात को भी हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्योंकि जो विदेश यात्रा है उसे भी यहाँ पर सस्ता किया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छी सौगात है। जो बच्चे भारत से बाहर जा कर के पढ़ते हैं, अब उनका आना जाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये विशेष पैकेज जो है वो विदेश यात्रा के लिए दी गई है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कैंसर पीड़ित पेशेंट्स जो रहते हैं उनकी दवाइयाँ काफ़ी महंगी आती है। ऐसे कई सारे कैंसर पीड़ित व्यक्ति हैं जो दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो इस स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब उनके लिए मोदी सरकार ने इस विशेष बजट, जो पूरा आम बजट पेश किया है, उसमें फोकस किया है कि कैंसर की दवाइयां जो है वो और सस्ती की जाएंगी ताकि जो कैंसर पेशेंट है उनको आसानी से दवाइयाँ मिल सके। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो 3 जो कर्तव्यों की यहाँ पर मोदी सरकार ने बात रखी है, 3 कर्तव्य इस पूरे बजट में उनके द्वारा रखा गया है। और वो है यहाँ पर सबसे पहले तो जनता की उम्मीद, सबका साथ सबका विकास और ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ाना, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। इस पूरे बजट में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे वो यहाँ पर बायोफॉर्म की बात करें, बायोफॉर्म में भी सरकार जो है वो निवेश करने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कपड़ों के व्यापारी हैं, कपड़ों का उद्योग जो है उसे यहाँ पर और बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ पर महात्मा गांधी यहाँ पर जो पूरा पार्क जो बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ और कपड़ों के उद्योग की बात की गई है उसमें विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो जो भी अभ्यर्थी बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, TCS 5% जो था उसे घटा करके 2% तक किया गया है। NRI जो व्यक्ति जो बाहर रहते हैं, जो कभी कभी आना जाना करते हैं, उन लोगों के लिए इस बार इस बात को ध्यान दिया गया है कि वो अपने पैन के थ्रू आसानी से संपत्ति जो है वो बेच सकेंगे। अब यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उनके विदेश में क्या क्या संपत्ति, इन सारी चीज़ों को ज़रूर रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात यहाँ पर रखी जाएगी तो वो इनकम टैक्स का जो कानून है वो इसी साल से यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। रेखा 1 अप्रैल 2026 से जब इनकम टैक्स का नया रूल जो है वो लागू होगा, इसमें इनकम टैक्स जो बेयरर्स हैं उन्हें 2 भाग में बांट दिया गया है। ITR 1 और ITR 2 दोनों ही काफ़ी आसानी से फॉर्म भर करके और रिटर्न फाइल कर सकेंगे। उसे और आसान किया गया है उन लोगों के लिए ITR 1 और ITR 2 के लिए। साथ ही यहाँ पर 31 जुलाई तक लोग अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। पहले कहीं ना कहीं बाध्यता रहती थी 31 मार्च तक, फिर से थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाता था, एक्सटेंड करते करते जून तक लेकर के गया था, लेकिन इस बार जुलाई 31 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे सभी लोग। देखिए शेयर मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मच चुका है इस बजट के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर देखा गया है। देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड एंड ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं STT की, तो वो 0.02% से बढ़ाकर यहाँ पर 0.05 करने का प्रस्ताव दिया गया है। और इससे कहीं ना कहीं शेयर बाजार जो है वो यहाँ पर काफ़ी भारी तरीके से गिरावट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली है। कल से ही शेयर बाजार में यह हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अब जब बजट पढ़ लिया गया है तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार और गिरने वाला है। और इसके लिए सभी लोग तैयार हो, क्योंकि काफ़ी संख्या में भारत के लोगों की अगर बात करते हैं तो लोग जो है वो यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट के से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग नए और नियमों की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी इनकम टैक्स फॉर्म्स है उसे भरना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं रेखा इसमें जिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। मेडिकल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर मोदी सरकार जो है मेडिकल हब बनाने की तैयारी कर रही है, जहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाएगा तो बुज़ुर्गों के इलाज पर फोकस किया जाएगा।
बुजुर्गों के इलाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए मोदी सरकार लगातार कई अहम फैसले लेते आई है और आयुर्वेद के नए जो सेंटर्स है उसे खोला जाएगा। जामनगर में WHO के एक नए रिसर्च को भी यहाँ पर और विस्थापित किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा वहाँ पर, ताकि और रिसर्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। शिक्षा के क्षेत्र में फोकस किया गया है, रोजगार के क्षेत्र में फोकस किया गया है, मेडिकल के क्षेत्र में फोकस किया गया है, यात्रा के क्षेत्र में फोकस किया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर महंगा कुछ होने वाला है तो यहाँ पर शराब और महंगी होने वाली है। यानी कि मोदी सरकार साफ तौर पर चाहती है कि जो शराब है वो कहीं ना कहीं लोग उससे दूर हो, और इस वजह से माना जा सकता है कि शराब के रेट जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। खनिज के रेट यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके लिए कई सारे राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा झारखंड कई मिनरल से भरा हुआ है रेखा, तो कहीं ना कहीं इसके रेवेन्यू में भी फ़ायदा होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो खनिज कॉरिडोर की भी तैयारी यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा की गई है। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, इसे एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाने की तैयारी है खनिज संपदा के रूप में, और इसके लिए भी निवेश किए जाने वाले हैं। तो काफ़ी संख्या में निवेश का दौर जारी रहेगा। सस्ता की अगर बात करते हैं तो कैंसर की दवाइयाँ सस्ती है, जैसा हमने पहले जिक्र किया। यहाँ पर कपड़ों के रेट और घटने वाले हैं, जूतों के रेट यहाँ पर घटने वाले हैं, साथ ही साथ अन्य और ऐसी कई सारी चीज़ें, CNG के रेट यहाँ पर घटने वाले हैं, यहाँ पर EV बैटरी के रेट्स घटने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को रखा गया। देखिए, EV अगर बैटरी के रेट्स अगर घटते हैं तो जो लोग भी इलेक्ट्रिक कार या स्कूटी खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि बैटरी सस्ती होगी तो कहीं ना कहीं उसके रेट में भी डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा रेट है आज अभी वर्तमान में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक बैटरी जो है उसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक कार या फिर स्कूटी, बाइक, इन सारी चीज़ों की रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। और हर साल लोग ऐसे भी मानते हैं कि अगर पेट्रोल बचा रहे हैं तो बैटरी तो ज़रूर बदलनी होगी। तो एक फ़ायदा यहाँ पर उन लोगों को ये भी मिल रहा है। CNG जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल लोग कर रहे हैं, डबल CNG के साथ लोग चलते हैं। जैसे अगर किसी की गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों के साथ चलती है तो लोग अब CNG की तरफ और ज़्यादा बढ़ करके आगे आ सकते हैं, क्योंकि CNG के रेट घटने वाले। पॉल्यूशन फ्री हो सकेगा हमारा पूरा भारत, क्योंकि जैसा दिल्ली का AQI प्रेशर है रेखा, वो सभी लोग जानते हैं कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो अगर CNG के रेट घटेंगे तो गाड़ियां जो है वो पॉल्यूशन फ्री हो सकेगी, हमारा भारत जो है वो और पॉल्यूशन फ्री हो सकेगा। इस पर कहीं ना कहीं एक फोकस हम लोग वातावरण के तौर पर देख सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार जो है वो और ज़्यादा इजाफा करने वाली है। उन सारी जगहों को और ज़्यादा यहाँ पर बेहतर करने की तैयारी है, जहाँ पर लोग जो है वो स्पेशली भारत आते हैं, घूमते हैं। खुद अगर हम लोग भारत देश की बात करें तो लोग अलग अलग जगह से अलग अलग राज्य जाते हैं जहाँ पर लोग घूम सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया गया है, क्योंकि पर्यटन एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का फैक्टर है हमारे लिए, भारत के लिए, जहाँ पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लोग आते हैं तो घूमने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पर पर्यटन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। रेलवे बहुत बड़ा फैक्टर हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की तैयारी है 7 राज्यों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं जिस पर बजट पर फोकस किया गया है इस पूरे बजट में, जिसकी कॉपी जो है वो आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पढ़ा है। रेखा, काफी अच्छे शब्दों में बताया, लेकिन इसके साथ ही जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी भी मौत जो है वो इस बजट में देखने को मिली है। यानी कि निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में AI को लेकर के भी बातें रखी है और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब का भी ऐलान किया है। यानी कि 15,000 स्कूलों में 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर्स लैब का ऐलान उनकी ओर से किया गया है, जो कि आने वाले दिनों में जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें वहां पर सिखाया जाएगा कि कैसे वो कंटेंट को और बेहतर कर सकते हैं। और चूंकि इस फील्ड में भी आजकल लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है पूजा, तो उन्होंने इस पर भी फोकस किया है इस बजट में। इसे आप कैसे देखती हैं, चूंकि आजकल के युवा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है, अपने कंटेंट के माध्यम से लोगों को तो जानकारियां दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने भी रोजगार को बढ़ावा देते हैं, और इस पर भी फोकस किया गया है इस बजट में। इसे आप कैसे देखती हैं?
देखिए, अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी कि एआई की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस पर बहुत महत्वपूर्ण फोकस किया गया है। खास तौर पर जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एआई के ज़रिए हमें अच्छी तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात उनके द्वारा कहा गया है। देखिए, एआई आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स की अगर बात करते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका जो है वो इस बजट में खुलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए, जब कंटेंट क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जगह मिलेगी जहां पर वो अपने आप को और बेहतरीन कर सकते हैं, तो उन्हें उनका जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, अभी एक सोशल मीडिया की बात करते हैं, अगर हम लोग 4 व्यक्ति एक रूम में बैठे हुए देखा, तो हर कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है, कहीं ना कहीं रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या तो फ़ोन देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएशन ही देख रहे होते हैं। और आज के डेट में लगभग सभी लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं जो फूड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फूड ब्लॉग्स बनाते हैं, या फिर अपनी आम जिंदगी को जनता के बीच में रखते हैं, तो वो उन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि और अच्छी अच्छी टेक्निकें जो हैं वो उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। उनका इनकम का सोर्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और एआई का उपयोग न केवल कंटेंट क्रिएटर के लिए, बल्कि एआई का इस्तेमाल जो है वो सरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी कर रही है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सिखाने का भी मौका दे रही है। और उसके लिए जो विदेश यात्रा है, कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियों की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, अलग अलग ऐप्स लॉन्च कर रही हैं। जैसे कि अगर अभी हम लोग वर्तमान में बात करें तो बहुत सारे लोग चैट जीटीपी का इस्तेमाल करते हैं। बीच में कुछ और भी चीज़ें आई थी जिस पर आप अपने ही कुछ फोटोज़ को डालें तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, बहुत ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छा मौका है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि वो और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, एक मूवी भी आई है जिसमें एआई का उपयोग किया गया है, जिसमें रियल कैरेक्टर्स को वहाँ पर प्लेस किया गया है, लेकिन उसकी पूरी एडिटिंग जो है वो एआई के थ्रू की गई है। महाभारत का एक बहुत अच्छा एपिसोड जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एआई को कितने अच्छे तरीके से उपयोग किया जा रहा है, और अगर उसे बढ़ावा मिलता है तो उससे और भी अलग अलग चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। रेखा, बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा, चूंकि एआई का ज़माना है और आजकल एआई के माध्यम से लोग कई तरह के क्रिएटिविटी जो है उसे लेकर के आ रहे हैं, और इस बजट में उस पर भी फोकस किया गया है। इस बजट में एक चीज़ और ख़ास है पूजा, कि महिलाओं पर भी फोकस सरकार ने किया है। अगर पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट में लखपति दीदी जो है उस योजना को लाया गया था, और इस बार इस योजना को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए निर्मला सीतारमण ने इस बार जो है सीमार्ट योजना की शुरुआत की जाएगी, इसका उन्होंने ऐलान किया है। यानी कि इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकती है और कम ब्याज पर लोन उठा सकती है। यानी कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की पूरी फोकस जो है वो मोदी सरकार ने इस बजट में किया है पूजा। चूंकि इस बार भी लखपति जो योजना थी उसे बढ़ाकर सीमार्ट योजना जो है उसका ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया है। इस पर क्या कहना चाहिएगा? इनका अगर मोदी बजट की बात करते हैं तो मोदी बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा किसान महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता है, और ख़ास तौर पर दिव्यांगों के तरफ घूमता है। यानी कि महिला, किसान और दिव्यांग, इनके लिए अलग अलग तकनीकें लाई जा रही हैं ताकि ये किस तरीके से आगे बढ़ सके, और यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सके, जो पशुधन, जो पशु चिकित्सा है उसके लिए भी यहाँ पर मोदी सरकार काम कर रही है ताकि किसानों को ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसान आसानी से, अगर जो भी किसान जो है वो पशुओं को पालते हैं और उसके बाद फिर उससे कोई भी अन्य रोज़गार जोड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी योजना है। देखिए, पशु जितने भी किसान जो है पशु को पालते हैं उससे बहुत सारे बेनिफिट्स उन्हें होते हैं, और उसके लिए राज्य सरकार उन्हें यहाँ पर अलग अलग स्कीम से जोड़ती हैं। तो इसमें एक केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। केंद्र सरकार भी इसके लिए लगातार काम कर रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो पशु बीमार हो जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। महिला जो कि आत्मनिर्भर बने उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। लखपति दीदी की जो योजना की शुरुआत की
की गई थी, उसी में एक पहल और यहाँ पर की गई है इस बजट में, ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार से जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो काम कर सके और उन्हें किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो मोदी सरकार ने यहाँ पर किया है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मोदी सरकार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस बजट में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर महिलाओं पर फोकस किया गया है। महिलाएं आगे किस तरीके से बढ़ें इस पर फोकस किया जा रहा है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं यहाँ पर मोदी सरकार ने निकाली है, तो उसी क्रम में इस पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। रेखा, बजट में एक चीज और नजर आई, चूंकि जिन राज्यों में चुनाव है जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चुनाव है, तो इन राज्यों पर भी मोदी सरकार का खास फोकस रहा है और उन्होंने जो ऐलान किया है हाई स्पीड ट्रेन का तोहफा जो है इस राज्यों में लेकर के आ रही है, तो क्या इसे चुनावी सौगात की तरह देखा जाए? सौगात अगर राजनीतिक रूप से देखा जाएगा तो ज़रूर इसे हम लोग कह सकते हैं चुनावी सौगात है, लेकिन अगर अन्य राज्यों की बात करें, अगर दिल्ली वाराणसी की बात करें तो इसे अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो ज़रूर वाराणसी से अगर आप जोड़ रही हैं तो उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है, तो फिर हमें उसे भी उसी नज़र से देखना होगा। मुंबई, पुणे, वहाँ पर भी यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव होने उसको लेकर के भी अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आम जनता के रूप में देखें तो इस हाई स्पीड रेलवे का पूरा फोकस जो है वो आम जनता के लिए होगा। जो लोग जनरल बोगी में ट्रैवल नहीं कर पाते, जो लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं, और देखिए बहुत सारे लोग दिल्ली से वाराणसी के लिए फ़्लाइट बुक करते हैं और इमरजेंसी में बुक करते हैं तो वही फ़्लाइट 10,000 का भी पड़ जाता है लोगों को, कई बार 20,000 का भी पड़ता है, जबकि उसके डिस्टेंस को देखिए काफ़ी कम है। और इसीलिए कहीं ना कहीं रेलवे को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और लाइफलाइन मानी जाती है रेलवे को। जब यहाँ पर फ्लाइट्स नहीं हुआ करते थे तो लोग इन्हीं रेलवेज़ के ज़रिए एक छोर से दूसरे छोर जाया करते थे और कहीं ना कहीं इसी को और मॉडर्नाइज किया जा रहा है और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी हम लोग अगर बात करेंगे, विकसित भारत को टॉपअप भी दिया गया है रेखा 2,000 करोड़ रुपए का। विकसित भारत के में ही कहीं ना कहीं वंदे भारत की भी शुरुआत हुई थी, अमृत काल माना जा रहा था उसे, और जो पूरा भारत का अमृत काल जो है उसी में वंदे भारत को और मॉडर्नाइज किया गया, स्लीपर बोगी लेकर के आई गई। तो रेलवे को और ज़्यादा किस तरीके से पुख्ता किया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे का उपयोग करें, जो लोग फ्लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए रेलवे जो है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है, लाइफलाइन है उनके लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो उसी को और ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं पेश करने की तैयारी है। और अगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है रेखा, तो आप इससे अनुमान लगाइए कि कितने इलाकों को वो पूरा कवर कर रहा है। रेखा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो मोदी सरकार ने जो है वो अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में कई सारी खास बातों का ध्यान रखा गया है। कई सारी चीज़ें सस्ती हुई है, कई सारी चीज़ें महंगी भी हुई है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उन पर भी इस बार मोदी सरकार ने फोकस किया है। सबसे बड़ी बात है कि कैंसर की दवाएं जो है वो अब सस्ती होंगी भारत में। साथ ही नया इनकम टैक्स जो है वो भी अब 1 जुलाई से भारत में जो है वो लागू हो जाएगा। हालांकि कई तरह के बजट को लेकर के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो उन्होंने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा 3 कर्तव्य के बारे में बताया। 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। और कई चीजें कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल
इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट कॉलेज के, डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना जिन्होंने इस बजट की सराहना की है। इसके लिए उन्होंने निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है और इस बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। 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 आप देख रहे हैं
लाइव इंडिया हर पल। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। जो कि प्रत्याशी हैं वो अपने अपने वार्ड में चुनाव को लेकर के नामांकन पत्र खरीदने में लगे हुए हैं और इस बीच मेयर के पद को लेकर के भी पार्टियां जो है वो रेस नजर आ रही है। हालांकि अभी तक किसी ने भी अपना मोर्चा नहीं खोला है, यानी कि अभी तक किसी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई सारे नाम हैं जो चर्चा में हैं। हालांकि नगर निगम का चुनाव झारखंड में काफी लंबे समय के बाद हो रहा है और इस बार इसकी सरगर्मी साफ तौर पर नजर भी आ रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल है, क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं और इस चुनाव को किस तरीके से लोग देख रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हालांकि इस पर उनसे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल पूजा यही होगा कि लंबे समय के बाद झारखंड में ये चुनाव हो रहा है, किस तरीके से आप देखती हैं नगर निगम का चुनाव? देखिए, अगर आप देखिएगा तो लगभग पूरे 5 साल का एक लंबा समय जो है वो यहाँ पर निकल गया और अगर शहर की सबसे पहली सरकार अगर कोई होती है, किसी अगर राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली सरकार अगर कोई होती है तो वो यहाँ पर निकाय, मेयर, पार्षद, यहाँ पर जितने जो ज़मीनी स्तर के जो नेता रहते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के काम करते हैं, जो जनता की समस्याओं को लेकर के काम करते हैं, वो सबसे पहली सरकार होती है। और वो सबसे पहली सरकार पिछले 5 साल से गायब थी और प्रशासन यानी कि जो अधिकारी हैं वो नगर निगम को चला रहे थे, अपने तरीके से चला रहे थे, अलग अलग चीज़ों को लेकर के काम कर रहे थे। लेकिन अब पूरे 5 साल के बाद ये चुनाव होने वाला है तो सभी अगर 48 निकाय क्षेत्रों की बात करते हैं तो मेयर लोगों को मिलेंगे, उप मेयर मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर पार्षद लोगों को यहाँ पर मिलने जा रहे हैं जो कि हर जनता की बात सुनते हैं। अलग अलग वार्ड है। अगर हम लोग सबसे बड़े वार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर धनबाद सबसे बड़ा निकाय क्षेत्र है जहाँ पर 56 वार्ड यहाँ पर हैं और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा रांची जो है वो 53 वार्ड के साथ है जहाँ पर लगातार काम होना है। तो जो रांची का ये पूरा आरक्षित क्षेत्र है, रांची से जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं मेयर पद के लिए वो यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। जातीय लोगों के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए ये आरक्षित है मेयर पद। और इस बार निकाय चुनाव में इस बात को भी ध्यान रखा गया है जो कि 2000 अगर हम लोग 8 की बात करते हैं, उसके बाद फिर 2013 की बात करते हैं तो 2008 में यहाँ पर जो उप मेयर चुने गए थे वो जनता के द्वारा चुने गए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 2013 की तो उस दौरान यहाँ पर जो उप मेयर चुने गए थे वो पार्षदों के द्वारा चुने गए थे और 2000 फिर जब 18 में ये जब चुनाव हुआ था उस दौरान जो उप मेयर चुने गए थे वो जनता के द्वारा चुने गए थे। लेकिन इस बार क्या किया गया है, ये वापस से पार्षदों के द्वारा चुना जाएगा। यानी कि जो थोड़ी बहुत नोक-झोंक, थोड़ी बहुत बातें जो सभी लोग जानते हैं कि मेयर और उप मेयर की बातें नहीं बन पाती थी क्योंकि पार्षदों के द्वारा उप मेयर चुने गए थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पर अभी भी बातें हो सकती हैं, ना बने, लोग जिनसे चुन करके ला रहे हैं। तो इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया। इस बार दलीय चुनाव नहीं होने वाले हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि दलीय चुनाव नहीं है तो पार्टी अपने तरफ से अपना प्रत्याशी खुद से घोषित नहीं कर रही है। लेकिन पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है पूजा, लेकिन जो सरगर्मी नजर आ रही है, भले ही दलीय चुनाव ना हो लेकिन पार्टियों ने पूरी तरीके से जोर पकड़ रखा है। जो भी उम्मीदवार क्षेत्र से उठ रहे हैं उन्हें पीछे से अपना सपोर्ट जरूर दिखाती नजर आ रही है। देखिए, पार्टी अगर ऑब्वियस सी बात है कि जब पार्टी यहाँ पर दलीय चुनाव नहीं है लेकिन पार्टी के अंदर से ही कार्यकर्ता उठ करके पार्षद के लिए जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी अगर वर्तमान की अगर बात करिएगा तो बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा फोकस्ड नाम जो है वो अशोक पढ़ाई का सामने आ रहा है और साथ ही साथ रोशनी खलको का भी आ रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर रमा खलको जो है वो प्रमुख उम्मीदवार में से नज़र आ रही हैं मेयर पद के लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो
मेयर रह चुकी हैं। सबसे पहली मेयर जब 2008 में जब ये चुनाव हुए थे तो वो उस समय की मेयर बनी थी और उसके बाद फिर ये बदलता चला गया। और उसके बाद जो 2013 में चुनाव हुए थे, कुछ वोटिंग और कुछ पैसे, ये कुछ इशू आए थे जिसके वजह से रमा खलको का काउंटिंग जो है वो उसी समय रोक दिया गया था और उसके बाद फिर बीजेपी की उम्मीदवार जो थी वो यहाँ पर चुनाव जीत करके आई थी। तो अब तो फिलहाल अगर हम लोग आशा लकड़ा की बात करते हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, तो अभी फिलहाल वो इस पूरे मैदान में नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूर यहाँ पर अशोक बड़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है क्योंकि वो पार्षद रह चुके हैं, सारी चीज़ों की जानकारी है। रमा खलको भी बहुत अच्छी टक्कर देने वाली है क्योंकि हर रोज़ वो जनता के बीच जा रही है, हर रोज़ काम हो रहा है। तो अब पार्षदों के बीच में भी अगर आप देखिएगा, भले ही दलीय चुनाव नहीं है लेकिन जो लोग शुरू से जनता के बीच में काम कर रहे हैं वो सभी लोग उठ करके खड़े हो रहे हैं। हर एक वार्ड से अगर हम लोग देखेंगे तो 2-2, 3-3 लोग जो है वो लगातार यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, पर्चा भरा जा रहा है और उसका स्क्रूटनिंग का भी टाइम जो है वो अब नज़दीक आ रहा है और स्क्रूटनिंग भी की जाएगी। जो लोग अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, जो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, इसमें बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन का भी इस बार नियम रखे गए थे कि अगर जो भी पार्षद बनना चाहते हैं, जो पार्षद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो उनका जो है वो 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कुछ नियम जो है नियमों को रखा गया है। इस नियम को दर्शकों को बताइए, क्या वो नियम? देखिए, इस नियम में रखा गया था कि मेयर के लिए 30 साल की बाध्यता यहाँ पर रखी गई थी। 30 साल से ऊपर जो है वो लोग यहाँ पर मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। पार्षद के लिए 21 साल का वर्ष रखा गया है। तो एक नई पीढ़ी को मौका देने का एक प्रयास है। इस अगर हम लोग वर्ष की बात करते हैं, वर्ष का जो यहाँ पर तालमेल रखा गया है, एक फ्रेशर जो तैयारी कर सके। मेयर पद के लिए भी लोग थोड़े से अनुभवी, 30 साल का अगर वर्ष रखा गया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 30 साल के ही हो, उससे अनुभवी लोग इसमें शामिल होंगे। और अगर 30 और 35 के बीच में आते हैं तो कुछ हर युवा पीढ़ी जो है वो आगे आएगी काम करने के लिए। वहीं अगर इसमें इस पूरे और नियम की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो पार्षद होंगे उनके 2 बच्चे ही होने चाहिए। अगर तीसरा बच्चा है तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का 3 बच्चा था, किसी कारणवश एक की अगर मौत हो जाती है, हुई हो, तो फिर वो वैलिड है क्योंकि उनके अभी वर्तमान में 2 बच्चे हैं, तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं इसकी भी बाध्यता रखी गई है, जो हर चुनाव में रखा जाता है। उसके बाद आपको पूरे संपत्ति का अपना ब्यौरा देना होगा, हर चुनाव में रखना होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो मेयर और जो पार्षद का जो पूरा काम रहेगा, इसमें सबसे ज़्यादा देखिएगा तो इस बार महिलाओं को एक अच्छी भागीदारी मिल रही है नगर निगम में। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो निकाय चुनाव है उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए लगभग यहाँ पर 25 सीटें जो हैं वो यहाँ पर आरक्षित की गई है। और इसी का नुकसान जो है उप मेयर को यहाँ पर उठाना भी पड़ा है। संजीव विजयवर्गीय, चूँकि जहाँ से वो चुनाव जीतते आते थे वो सीट महिला आरक्षित हो गई और इसका नुकसान उन्हें इस बार उठाना पड़ा है। देखिए, सिर्फ संजीव विजयवर्गीय नहीं है, कई ऐसे पार्षद हैं जो कि वो मेल सेक्शन था और उसके बाद फिर वो यहाँ पर फीमेल कर दिया गया है। जो एससी सीट थी एसटी में कन्वर्ट हुई है। रांची वाले जितने भी सीट्स हैं वो सारी चीज़ों को अगर देखिएगा तो एससी, फिर एसटी और फाइनली एसटी सीट में से रखा गया है, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। ओबीसी को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। ओबीसी आरक्षित सीट को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि ओबीसी का आरक्षण कैसे रहना चाहिए। रोस्टर का पालन किया गया है, जो कि हम लोग कह रहे थे कि जो ट्रिपल टेस्ट होना था वो किस तरीके से किया गया, इस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। लेकिन फाइनली अब नगर निकाय चुनाव जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है और 23 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 27 फरवरी को काउंटिंग है। तो कई सारे लोग जो है इस बार रेस में हैं। कई लोग अपना वार्ड बदल रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में अगर जिसका बहुत अच्छा काम है उसका अगर महिला आरक्षित कर दिया गया तो वो दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी लोगों का, इस पर बहुत सारे लोगों का किस्मत एक बार फिर से आजमा रहे हैं अलग अलग वार्ड में। लोगों ने अपनी पत्नियों के नाम को भी आगे रखा हुआ है जहाँ पर सीटें महिला आरक्षित हो गई है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा पूजा कि जिस नाम की आपने चर्चा की, चाहे वो रमा खलको हो, रोशनी खलको हो या फिर अशोक बड़ाई को, अभी तक इनके नामों पर मुहर नहीं लगाई गई है किसी भी पार्टी की ओर से। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? देखिए, क्योंकि दलीय चुनाव नहीं है,
सबसे बड़ी बात कि ये दलीय चुनाव नहीं है। दलीय चुनाव नहीं होने के वजह से यहाँ पर लोगों का नाम पूरी तरीके से क्लियर आउट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग कल की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक रखी गई थी, उसमें भी इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है कि आखिर कौन क्या करने वाला है। और इसमें जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो अपने तरीके, सबको अपने अपने तरीके से चुनाव यहाँ पर लड़ रहा है, क्योंकि ये निकाय का चुनाव है और हर कोई आगे बढ़ चढ़ करके आना चाहता है। क्योंकि रमा खल को पहले से यहाँ पर मेयर रह चुकी हैं तो बहुत सारी चीज़ों से अवगत है। और अभी फ़िलहाल नगर निगम जो है वो प्रशासनिक रूप से चल रहा है। यहाँ पर जो प्रशासक है वो सारी चीज़ों को चला रहे, सारी चीज़ों को देख रहे हैं और कोई भी कर रहे हैं। तो इससे दो मत नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो, जब यहाँ पर मेयर पार्षद नहीं थे तब किया गया। पार्षदों के द्वारा कई बार अपील भी डाली जा रही थी कि यहाँ पर ये काम किया जाना चाहिए। कई सारे दुर्गा पूजा के दौरान आप देखी होंगी कि कई सारे रोड पूरी तरीके से टूटे हुए थे, वहाँ पर उनके द्वारा काम किया गया। तो बहुत अच्छा काम उनके द्वारा भी यहाँ पर किया गया। तो मिला जुला करके अभी फ़िलहाल निगम चल रहा था, अब एक और ज़ोर जो है वो पार्षदों के द्वारा चलेगा, क्योंकि प्रॉपर एक बजट अलॉट किया जाता है निगम में। जैसे विधानसभा और संसद में बजट अलॉट किए जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी एक पूरा सत्र चलता है जिसमें बजट अलॉट किए जाते हैं, खर्च की राशि बताई जाती है, क्या क्या प्रस्ताव आने हैं उस पर चर्चा होती है। तो वो एक अलग सदन है जहाँ पर कार्रवाई की जाती है। 5 साल के बाद एक बार फिर से जो शहर की सरकार है वो अब सुचारू रूप से काम करेगी 27 फरवरी के बाद, चूँकि 27 फरवरी को जो है वोटों की गिनती होनी है। पूजा, एक सवाल ये भी रहेगा, चूँकि ये जो चुनाव है महत्वपूर्ण है और लंबे समय के बाद हो रही है, तो प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की गई है, चूँकि कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की है? देखिए, प्रशासन की ओर से भी अलग अलग यहाँ पर जो पूरे बूथ है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं और बूथ तैयार करने के बाद फिर लोगों को उस जगह पर रखा जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 48 लाख बैलेट पेपर यहाँ पर प्रिंट आउट कराए गए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर पे हम लोग वापस लौट गए हैं। और इस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि बैलेट पेपर क्यों, ईवीएम था तो बैलेट पेपर क्यों। लेकिन जब हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस पर बातचीत की थी तो उनका कहना था कि अभी फ़िलहाल ईवीएम की अगर हम लोग बात करें तो हमारे राज्य में उतने ईवीएम नहीं हैं जिस पर हम लोग वोट कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठा था। 48 लाख, आप इससे अनुमान लगाइए कि कितनी संख्या में लोग हैं। देखिए, एक और सबसे खास बात यहाँ पर क्या है कि 2024 के अनुसार जो लोकसभा चुनाव होने वाले थे उसके अनुसार यहाँ पर मतदाताओं के नंबर्स को काउंट किए गए थे और उसी आधार पर इस बार यहाँ पर चुनाव कराए जा रहे हैं। तो 2024 से अब 2026 है, इस बीच में कई सारे युवा जो है वो 18 उम्र जो है वो पहुंच चुके होंगे, 18 साल के हुए होंगे। वो उन लोगों को इस बार वोटिंग का राइट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वापस से अगर सर्वे कराना हो तो और लंबा टाइम खींचेगा, जिसके लिए फ़िलहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी की भी द्वारा यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई थी। तो इसलिए जो पुराने जो हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था, झारखंड हाई कोर्ट में निकाय चुनाव को, रोशनी खलकोई इसके पिटिशनर थी जिन्होंने इसके खिलाफ में रखा था कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए क्योंकि जनता परेशान है। तो हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि 2024 में जो मतदाताओं की काउंटिंग हुई थी उसी अनुसार इस बार चुनाव कराए जाएं। तो लगभग अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 5 लाख ऐसे युवा हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो अपना पहला वोट जो शहर की सरकार है उसके लिए वोट नहीं डाल पाएंगे। तो वो इफेक्टेड कहीं ना कहीं यहाँ पर होते नज़र आ रहे हैं। पूजा, हमने इस चर्चा में बात की कि दलीय चुनाव नहीं है, पार्टियों का भी जिक्र किया कि बैक सपोर्ट से उनका सपोर्ट अपने कार्यकर्ताओं को रहेगा। तो क्या इस चुनाव में जयराम महतो की पार्टी जो जेएलके है उसके कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में चूंकि ताल ठोक ही रहे हैं और उसकी भी आहट नजर आ रही है, तो किस तरीके का माहौल होगा, टक्कर किस तरीके का होगा? क्या विधानसभा चुनाव की तरह ही पूरा समीकरण बन करके सामने आएगा इस बार भी? देखिए, अगर हम लोग जयराम महतो की पार्टी की बात करते हैं, जेएलकेएम की, तो वो युवाओं के बीच में ज़रूर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा युवाओं के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर
उनका सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब लोगों को अलग अलग दलीय चुनाव चूंकि नहीं हो रहे तो सिंबल उस तरीके के मिलेंगे नहीं, सब अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे होंगे, वार्ड के हिसाब से सब लोगों का अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग सिंबल्स। तो इस बार उन्हें कैची छाप तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर अगर कैची छाप अगर उन्हें दिया जाता है तो फिर वो प्रॉपर JLKM का सिंबल हो गया। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। JLKM की ओर से कुछ खासा इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है निकाय चुनाव में, क्योंकि JLKM के ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं पंचायती क्षेत्र से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो ऐसे इलाकों से जुड़े हुए, चाहे हम लोग अगर बोकारो के अगर सुदूर इलाके की बात करें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा युवा आते हैं, धनबाद से के जो सुदूर इलाके हैं वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम लोग के रांची क्षेत्र से भी अगर हम लोग बात करें तो कई ऐसे सुदूर क्षेत्र जो है वो वहाँ से भी जुड़े हुए हैं। तो ये अलग एक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पर रांची की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए रांची में अगर टोटल 53 वार्ड्स हैं तो यहाँ पर बुंडू में भी अलग अलग वार्ड्स हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी फिलहाल ध्यान में रखा गया है। पूजा, कब तक जो मेयर के उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो जाएगी या फिर उनकी ओर से पर्चा भरा जाएगा, नामांकन पर्चा? देखिए मुझे लगता है कि अंतिम तारीख भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और उसकी तैयारियां लगातार चल रही है। 29 तारीख से 4 तारीख तक का वो पूरा समय है जो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रहता है, और ये समाहरणालय में पूरा फॉर्म भरा जा रहा है। तो 4 तारीख तक का दिन है और आज 1 तारीख हो चुका है रेखा, और आगे भी डेट जो है वो लगातार बढ़ेगा ही, 2, 3, 4। तो मुझे लगता है कि अंतिम पायदान तक पहुँचते जो दिन होगा वो ज़रूर यहाँ पर क्लियर आउट कर दिया जाएगा। अभी लोग पार्टी अपने एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है, लोगों के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि किसी को भी नाराज़ नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान पार्टी यहाँ पर रखी है, क्योंकि दलीय चुनाव नहीं है, तो इस बात को भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। किसी की नाराज़गी जो है वो हार का एक बड़ा कारण बन सकती है और इस पर फोकस जो है वो सभी का है, और इसीलिए अलग अलग स्तर से तैयारियां हो रही है। मीटिंग का दौर भी जारी है, लेकिन अब तक फिलहाल मेयर के नामों का ऐलान जो है, पद के नाम का ऐलान नहीं किया गया है किसी भी पार्टी की ओर से, सिर्फ नाम जो है वो चर्चा में ही है। धन्यवाद पूजा हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो नगर निगम का चुनाव है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है झारखंड में, और इस चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हमारी कोशिश होगी कि हम आप तक पहुँचाएँ। जिन चीज़ों को बारीकियों से आपको जानने की ज़रूरत है उन बारीकियों से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी फिलहाल आपके साथ होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। 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 आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।
नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का बजट पेश किया है, केंद्रीय बजट पेश किया है, और उन्होंने इस दौरान कहा भी, कई बातें उन्होंने की है। आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है। साथ ही हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो। रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, परिवारों की जो शक्ति है खरीदने की, और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा, इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिली है। बजट में पीसीबीए पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल्स, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर की कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में 100% निवेश की छूट से बीमा प्रीमियम में भी कमी आ सकती है और कपड़ा और चमड़ा उत्पाद भी सस्ते हुए हैं। इसके साथ ही 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया गया है। 6 दवाओं पर ड्यूटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है, यानी जो चीज़ें महंगी होने वाली हैं, उनमें सबसे ऊपर शराब, स्क्रैप और खनिज शामिल हैं। बता दें कि शराब, स्क्रैप और खनिज महंगी होंगी। एक बार फिर बात कर लें जो वस्तुएं सस्ती हुई हैं। कपड़े हैं, लेदर आइटम है, सिंथेटिक फुटवेयर, चमड़े के उत्पाद, कैंसर, शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री, लिथियम आयन सेल, मोबाइल बैटरियां सस्ती होंगी, सोलर ग्लास सस्ते होंगे, मिक्स्ड गैस, सीएनजी, ईवी, माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन और विदेश यात्रा सस्ते होने जा रहे हैं। Atmanirbharta as a lodestar. We have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. वहीं सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि आज हम एक ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में है और संसाधनों और सप्लाई चेन तक पहुंच बाधित है। नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम को बदल रही है, जबकि पानी, ऊर्जा और जरूरी खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता रहेगा, जिसमें महत्वाकांक्षा और समावेश को संतुलित किया जाएगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था को और बढ़ते व्यापार और पूंजी की जरूरतों के साथ भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए, ज्यादा निर्यात करना चाहिए और स्थिर लंबे समय के निवेश को आकर्षित करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इससे किसानों को कृषि कार्य को समय से करने में काफी फायदा होगा। 50,000 अटल टिंकर लैब की स्थापना की बात भी कही गई है। आईआईटी की क्षमता बढ़ोतरी करते हुए देश के 23 आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 5 आईआईटी को बेहतर शिक्षा संवर्धन के लिए अलग से राशि दी जाएगी। आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएम रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। एआई की शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 सीट की बढ़ोतरी की जाएगी। अगले 5 सालों में इसे 75,000 सीट तक बढ़ाया जाएगा। बजट से साफ दिखता है कि देश में गरीबी कम करने पर जोर दिया गया है। यह भी बता दें कि बजट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। Environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion.
As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. बजट के बाद नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है उसे जरूर सुनेंगे, क्योंकि नेताओं की प्रतिक्रिया, चाहे बीजेपी नेता हो, पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं इस बजट के बाद। आइए सुनते हैं बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ बजट को लेकर कहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया, 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया, कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। और कई चीजें, कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए आशाओं का बजट है और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के सुधार का बजट है। प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो या रोजगार सृजन का क्षेत्र रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे परिवहन और रेल के संदर्भ में रहा हो या पर्यटन विकास के क्षेत्र में रहा हो, मैं समझता हूं कि ये एक दूरगामी बजट है। और इस बजट के जो परिणाम हैं, वो चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, इनको जो प्राथमिकता देकर किया गया है, मैं समझता हूं कि एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका एक ईमानदार एक्सरे है और निश्चित रूप में ये एक बजट जो है आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। जी सर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करी गई, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की बात की गई और कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए भी जो है एक नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ सस्ती भी हो, जैसे माइक्रोवेव है, ओवन है, मोबाइल फोन है, ईवी बैटरी है, जूते हैं, कैंसर से संबंधित दवाएं हैं, शुगर से संबंधित दवाएं हैं, ये सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अनुमान था 4.5 से नीचे राजकोषीय घाटे का, अद्भुत है कि 4.4 के आसपास राजकोषीय घाटा रहा है और अगले लक्ष्य को उन्होंने 4.3% राजकोषीय घाटे के। आज का बजट विकसित भारत और भारत की संस्कृति दोनों को मिलाकर बनाया गया है। भारत को बायोफार्मा हब के रूप में डेवलप किया जाए, मेडिकल हब के रूप में डेवलप किया जाए, खुद भारत के लोगों की हेल्थ की चिंता के साथ बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहें, इस तरह का प्रोसीजर किया गया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर्स को डिक्लेयर किया गया है और टूरिज्म के लिए अलग से ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविजन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, आयुर्वेद की बात की गई है, टैक्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। तो मुझे लगता है 2047 के विकसित भारत को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसका पूरा रोड मैप इस बजट में रखा गया है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन और भारत के बारे में लगातार उनका बयान आता है। इस बार उन्होंने चीन और भारत के बारे में क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा है कि चीन का स्वागत है, वे आए और तेल पर एक शानदार डील करें। हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत आ रहा है और वे ईरान से खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। हमने डील का कंसेप्ट पहले ही बना लिया है। I don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China.
We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China is welcome to come in. ओलंपियन सेटलर शाइना नेहवाल ने कहा है कि मैं इतने बड़े लेवल की मैराथन आयोजित करने के लिए इंडियन नेवी को बधाई देती हूं। उन्होंने कहा है कि मुझे ये देखकर बहुत गर्व हो रहा है कि लगभग 14,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। ऐसा लगता है कि लोग फिटनेस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। बस कुछ ही समय की बात है जब भारत भी एक स्पोर्टिंग देश बन जाएगा। First of all, I would like to congratulate Indian Navy for conducting such a high-level marathon, and I think it's their second year. And this time, I'm so proud to see that almost close to 14,000 people have participated, and such a nice atmosphere. You know, everyone is liking fitness nowadays in India, and that's showing that all these marathons are working really well. And with that, Government of India is coming up with Fit India. You know, I've taken part recently in one of the events, and there are a lot of cyclothon happening, a lot of marathons happening. So this means that people are taking fitness very seriously and they are eating healthy. Everyone wants to stay active, and of course the job is you know, sometimes making you a little tired and stressed out by the end of the day. But I will still request all the people out there to continue training every day, keep your body fit and relaxed, and also make sure you're eating healthy, because that's only way you will think well, you know, work better. And being a sports person, I would like to see a lot more upcoming sports person in different sports. And in the future, if you are thinking of conducting Olympics in India, then I hope that we can beat the likes of China, America and Australia in the medal tally as well. So I think we are going in the right direction. It's just a matter of time when you know, India will become a sporting nation as well and bring many more medals to the country. Yeah. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारतीय नौसेना ने हाफ मैराथन का आयोजन किया। नेवी देश की तटों की रक्षा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ ही प्रधानमंत्री की फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। 13,500 से अधिक दिल्ली वासियों ने हाफ मैराथन में भाग लिया। 24 देशों के लोगों ने भी इसमें भाग लेकर फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मैं नेवी का अभिनंदन करता हूँ। आज हाफ मैराथन की सेकंड एडिशन का आयोजन करा। इंडियन नेवी देश की तटों की रक्षा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट को भी बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। 13,500 से अधिक दिल्ली वासियों ने हाफ मैराथन में भाग लिया। 24 कंट्री के लोगों ने भी इस मैराथन में भाग लेके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। मैं नेवी को अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही सोशल कोज के साथ काम करने से देश हेल्दी बनता है और देश विकसित बनता है। मैं मानता हूँ कि नेवी के द्वारा आयोजित आज की हाफ मैराथन नहीं केवल फिटनेस को बढ़ावा देगी, लेकिन विकसित भारत में देश के युवा और देश के नागरिकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी। धन्यवाद। सरकार लगातार फिटनेस को लेकर काफ़ी जागरूक है, चाहे वो संडेज ऑन साइकिलिंग हो, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे प्लॉग रन हो, तमाम तरीके से लोगों में एक फिटनेस की जागरूकता ला रही है। तो आप भी खुद संसद में साइकिलिंग किया करते थे, संसद में साइकिल से जाया करते, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? फिटनेस की कितनी महत्वपूर्ण है आज की डेट में? मोदी जी ने जब देश आज़ादी का शताब्दी दिवस मनाता हो, तब हमें विकसित भारत बनाना है, इस संकल्प हम सबको दिया है। और कोई भी राष्ट्र को विकसित बनना है तो उसकी प्राथमिकता है कि देश के नागरिक स्वस्थ रहे, और देश के नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए देश के हर नागरिक फिट रहे, वो आवश्यक है। इसलिए फिट इंडिया से हम देश के नागरिक को स्वस्थ रखते हैं, और स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। मोदी जी के समृद्ध राष्ट्र बनाने की ये विचार और कल्पना को साकार करने के लिए हम फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि जो भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो अवैध निर्माण और अवैध संपत्ति पर होती है।
पूरी तरह कानून का पालन करते हुए वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। किसी भी निजी संपत्ति पर कभी कोई बुलडोजर नहीं चला है। मैं समझता हूँ जो भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है अवैध निर्माण पे होती है, अवैध संपत्ति पे होती है, जो पूरी तरह कानून का पालन करते हुए तब वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। किसी की निजी संपत्ति पे कभी कोई बुलडोजर न चला है न आगे चलेगा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्राथमिकता मां माटी मानुष से हटकर वंशवाद की राजनीति हो गई है। उनके लिए अपने नहीं, मां मानुष और माटी वाली सिर पर चढ़कर बोल रही है। अब वो मां मानुष और माटी की जगह पर वो बुआ और भतीजे तक सीमित हो गई है। भतीजे का हित आज बंगाल के हित से भी सर्वोपरि हो गया है और मैं समझता हूँ ये पूरी बंगाल की जनता देख रही है। नहीं, मां मानुष और माटी वाली ममता जी की ममता आज सिर पर चढ़कर बोल रही है। अब वो मां मानुष और माटी की जगह पर वो बुआ और भतीजे तक सीमित हो गई है। भतीजे का हित आज बंगाल के हित से भी सर्वोपरि हो गया है और मैं समझता हूँ ये पूरी बंगाल की जनता देख रही है। नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बीएसएफ को जमीन न दिए जाने पर बीजेपी नेता निशीत प्रामाणिक ने कहा है कि मैं सीमा इलाके के पास गया था, वे बंजर बेकार जमीनें हैं जिन्हें खाली छोड़ दिया गया है। जमीन के मालिक बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है। जमीन राज्य का मामला है और केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार जमीन क्यों नहीं दे रही है या इसके पीछे उनका मकसद क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैं गृह मंत्रालय में मैं जब एमओएस के नाते वहाँ पर राष्ट्रमंत्री के नाते मेरा कर्मरत था, उस समय मैंने ये जो बॉर्डर है अनफेंस्ड एरिया है, मैंने उसमें प्रवास किया और लोगों के साथ बात किया जिन लोगों का ज़मीन है। तो वो सभी जो जीरो लैंड का ज़मीन है जहाँ पर फेंसिंग होने वाला है या होगा, होने का परिकल्पना है, वो सभी जो ज़मीन है वो बंजर पड़ा रहता है। ना तो खेती कर सकते हैं, ना कुछ वहाँ पर वो लोग जो है एग्रीकल्चर की वर्क कर सकती है, क्योंकि दोनों साइड का जो तनाव रहता है बांग्लादेश और इंडिया का बीएसएफ, उस बीच में किसान जाकर खेती नहीं कर सकते। तो किसान भी चाहते हैं कि वो ज़मीन सरकार ले ले, लेकिन आप लोगों को पता है कि लैंड इज अ स्टेट मैटर। जो संवैधानिक जो ढांचा है उस हिसाब से केंद्र सीधा जाकर जो है किसान से वो जमीन नहीं ले सकते हैं, वो राज्य के माध्यम से ही करना है, ऐसा ही संवैधानिक पद्धति है। अगर हम लोग डायरेक्टली लेने का प्रयास करें तो राज्य सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है संविधान का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं और बार बार राज्य के पास वो जमीन मांगा गया है। किसान देने के लिए तैयार है, जिसका जमीन है वो देने के लिए तैयार है। जिसका जमीन है वो तो कहते हैं अगर हम जमीन दे देंगे लैंड यूजर सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर उनका घर में कोई शिक्षित अगर युवा या युवती होगा तो उनका भी जॉब मिलेगा। तो बहुत सारा उल्टा पैसा भी मिलेगा। जो जमीन बंजर पड़ा है, कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन राज्य सरकार का मोटिव क्या है ये पता नहीं है, किसको आह्वान करने के लिए कि वो अवैध प्रवेशद्वार बना के रखा है, ये तो एक बड़ा प्रश्न है। तो स्वाभाविक है, अभी हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि 31 मार्च के अंदर वो जमीन देना होगा। देखते हैं कि ममता बनर्जी और क्या नया ढंग रोजते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी जयराम जी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि हम इसके तहत परिसंपत्ति का निर्माण करेंगे। गांव में तय होगा कि ग्रामीण स्तर पर क्या निर्माण होगा। हमने 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया है, ये गारंटी है। किसान जिस समय फसल की बुआई करेगा, कटाई करेगा, उस समय इसे बंद करेंगे ताकि किसान को मजदूर मिल सके। ये सारे प्रावधान किए गए हैं। मजदूर आएगा तो उसकी डिजिटल एंट्री होगी, पक्का काम होगा और मजदूर भी काम करने आएंगे। ये योजना मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। खाने को नहीं मिल रहा। पहले भ्रष्टाचार होते थे, जॉब कार्ड लोगों के घरों में मिलते थे। कोई मुंबई में काम कर रहा है और उसका यहाँ जॉब कार्ड बन जाता था, कोई चेन्नई में नौकरी कर रहा है उसका जॉब कार्ड यहाँ बन जाता था। लोगों के घरों में लाखों जॉब कार्ड मिले। पहले भ्रष्टाचार होता था। आज आप मुझे कोई भी बता दे कि पहले नरेगा के अंदर निर्माण हुआ है और आज कोई खड़ी है, बता दो। कोई पॉइंट बनाया है, बता दो। हम ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करेंगे। गांव में तय होगा कि हमारे गांव में क्या बनना चाहिए। गांव ग्रामीण स्तर पर तय होने के बाद 15 दिन में रोजगार देना शुरू करना है, गारंटी है इसकी।
100 दिन से बढ़ा के 125 दिन रोजगार देने का काम किया। ये गारंटी है। किसान जिस समय बुआई करेगा, कटाई करेगा फसल की, उस समय हम बंद करेंगे ताकि किसान को और मजदूर मिल सकता है। ये सारे प्रावधान इसमें हमने किया है। पेमेंट की गारंटी है। पखवाड़े के अंदर पेमेंट होगा, इसकी गारंटी है। पेमेंट पखवाड़े के अंदर नहीं किया, जो मजदूर काम करेगा उसका पेमेंट समय पे नहीं होता है तो उसको पेनल्टी देने का प्रावधान हमने किया है। मजदूर आएगा तो डिजिटल उसकी एंट्री होगी, ये भी सुनिश्चित किया है। तो पक्का काम होगा, मजदूर भी आएगा काम पर और परिसंपत्ति का निर्माण होगा, तो वो एक विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सरकार मानदेय भी बढ़ाएगी क्या इसमें? अरे कमाल है, रोजगार में मानदेय भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। मजदूर को पेमेंट मिलेगा। पहले मुझे बता दो किसको 200 रुपये मिलता था? मजदूर काम करता था दिन भर, लेकिन पैसा उसको पूरा मिलता था क्या? हमने पेमेंट की गारंटी की है। तो ये सब काम है। बीबी जयराम जी बहुत अच्छा है। आज माघ पूर्णिमा है। आपको 3 तस्वीर हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी की, जहां माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु गंगा में पावन स्नान और पूजा अर्चना किए। माघ की पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजघाट गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां सुबह 4 बजे से ही स्नान के लिए पहुंचने वाले भक्तों का सिलसिला लगातार बढ़ता गया और देखते ही देखते गंगा घाट आस्था के जन सैलाब से भर गया। दूर दराज के क्षेत्रों, मुरादाबाद के विलारी क्षेत्र, बरेली क्षेत्र और बदायूं के विलसी और बिसौली क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों से रात में ही गंगा तट पर पहुंचे और वहीं निवास किए और ब्रह्म मुहूर्त में विधिवत स्नान करते हुए नजर आए। उड़ीसा की पुरी की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने केंद्रीय बजट 2026 की प्रस्तुति का स्वागत करते हुए रेत कलाकृति बनाई है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलाकृति उन्होंने बनाई है। ये पुरी के तट पर बनाई गई है, जहां पर रेत से कलाकृति उनकी खास विशेषता है और अपने हाथों से जिस तरह से रेत से वो अद्भुत कलाकृति करते हैं और अपडेट कलाकृति करते हैं। और आज बता दें कि विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने, मशहूर रेत कलाकार हैं, केंद्रीय बजट 2026 की जो प्रस्तुति हुई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उसको देखते हुए, उसको लेते हुए ये एक बहुत ही बेहतरीन झलक आप देख रहे हैं और इस प्रस्तुति का स्वागत किए हैं। और इसको रेत कलाकृति, रेत से ही उन्होंने एक बहुत ही बेहतर कलाकृति बनाई है। ये बहुत ही मशहूर विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के उल्लेख से की और कहा कि यह बजट देश के लिए शुभ अवसरों के बीच पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा दिखावे की बजाय जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और हर निर्णय में आम लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है और आज के बजट में भी आम लोगों को ध्यान में रखते हुए ही बजट तैयार किया गया है। इस बजट से आम लोगों को जितनी उम्मीदें थी उस पे कई ज्यादा जो है ये बजट खरा उतरेगा जब इस बजट की घोषणा हम करेंगे। ऐसी बातें निर्मला सीतारमण ने कही और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार सुधारों से तेज आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि सरकार द्वारा किए गए लगातार आर्थिक सुधारों और नीतियों के परिणाम स्वरूप देश ने 7% की उच्च विकास दर हासिल की है। विकसित भारत की ओर अग्रसर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अब विकसित भारत की दिशा में विश्वास से भरे कदम आगे बढ़ा रहा है और यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसके अलावा मंदिरों वाले शहरों के विकास के लिए भी सरकार सहायता देगी। ऐसे शहरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार ने 7
नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेगी। ये बातें उनकी ओर से कही गई है, यानी कि कई सारी योजनाएं तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सौगात इस बजट में लोगों को दी गई है। हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन पूजा से चर्चा से पहले हम निर्मला सीतारमण की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने बजट के दौरान कही है वो आपको सुनाएंगे और उसके बाद अपनी सहयोगी पूजा के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. तो निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है और बजट पेश करने के साथ ही शेयर बाजार में भी जो है वो हाहाकार मच चुका है और इसको लेकर के कई सारी जानकारियां भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन बजट में क्या कुछ खास है ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपनी सहयोगी पूजा के साथ। और पूजा, सबसे पहले तो आप बजट बताइए कि ये जो बजट है उसे आम लोगों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जिसमें आम लोगों को कई सारी राहत भी दी गई है। रेलवे से जुड़ी कई सारी सौगातें जो है वो आम लोगों को दी गई है और इसके साथ ही कैंसर की दवाइयां जो है वो भी भारत में सस्ती हुई है। एक बार विस्तार पूर्वक इस बजट के बारे में दर्शकों को बताइए कि उनके लिए क्या कुछ खास है इस बजट में। ये बात है कि यहाँ पर जो पूरा आम बजट यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पढ़ा गया है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रेलवे को एक विशेष सौगात के रूप में जनता के बीच प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 7 राज्यों में हाई स्पीड यहाँ पर रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। दिल्ली से वाराणसी, मुंबई, पुणे और साथ ही कई अन्य राज्यों में भी इसका पूरा का पूरा विशेष पैकेज जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा था। बजट से पहले जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि रेलवे इस बार कुछ खास रहने वाला है, तो वो रेलवे का एक बहुत अच्छा पैगाम जो है इस पूरे बजट में देखने को मिल रहा है। जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर तैयार किया जाएगा वो आम जनता के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। दिल्ली से वाराणसी जिन लोगों को जाना है वो काफ़ी जल्दी आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे को और आसान करने का प्रयास किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो रेलवे की ओर आगे बढ़े। जो पुरानी एक थॉट प्रोसेस थी रेखा कि रेलवे लोग जल्दी नहीं जाते थे क्योंकि बहुत टाइम लगता था, बहुत आराम से ट्रेन जो है वो चलती थी, ये सारी वजहों से कहीं ना कहीं लोग जो है वो हवाई यात्रा पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और हवाई यात्रा से इस बात को भी हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्योंकि जो विदेश यात्रा है उसे भी यहाँ पर सस्ता किया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छी सौगात है। जो बच्चे भारत से बाहर जाकर के पढ़ते हैं अब उनका आना जाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये विशेष पैकेज जो है वो विदेश यात्रा के लिए दी गई है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कैंसर पीड़ित पेशेंट्स जो रहते हैं उनकी दवाइयाँ काफ़ी महंगी आती है। ऐसे कई सारे कैंसर पीड़ित व्यक्ति हैं जो दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो इस स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब उनके लिए मोदी सरकार ने इस विशेष बजट जो पूरा आम बजट पेश किया है
उसमें फोकस किया है कि कैंसर की दवाइयां जो है वो और सस्ती की जाएंगी ताकि जो कैंसर पेशेंट है उनको आसानी से दवाइयां मिल सके। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो 3 जो कर्तव्यों की यहाँ पर मोदी सरकार ने बात रखी है, 3 कर्तव्य इस पूरे बजट में उनके द्वारा रखा गया है और वो है यहाँ पर सबसे पहले तो जनता की उम्मीद, सबका साथ सबका विकास और ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ाना, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। इस पूरे बजट में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे वो यहाँ पर बायोफॉर्म की बात करें, बायोफॉर्म में भी सरकार जो है वो निवेश करने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कपड़ों के व्यापारी हैं, कपड़ों का उद्योग जो है उसे यहाँ पर और बढ़ावा दिया जा रहा है और यहाँ पर महात्मा गांधी यहाँ पर जो पूरा पार्क जो बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ और कपड़ों के उद्योग की बात की गई है उसमें विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो जो भी अभ्यर्थी बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं TCS 5% जो था उसे घटा करके 2% तक किया गया है। NRI जो व्यक्ति जो बाहर रहते हैं, जो कभी कभी आना जाना करते हैं, उन लोगों के लिए इस बार इस बात को ध्यान दिया गया है कि वो अपने पैन के थ्रू आसानी से संपत्ति जो है वो बेच सकेंगे। अब यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उनके विदेश में क्या क्या संपत्ति, इन सारी चीज़ों को ज़रूर रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात यहाँ पर रखी जाएगी तो वो इनकम टैक्स का जो कानून है वो इसी साल से यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। रेखा 1 अप्रैल 2026 से जब इनकम टैक्स का नया रूल जो है वो लागू होगा, इसमें इनकम टैक्स जो बेयरर्स हैं उन्हें 2 भाग में बांट दिया गया है। ITR 1 और ITR 2 दोनों ही काफ़ी आसानी से फॉर्म भर करके और रिटर्न फाइल कर सकेंगे, उसे और आसान किया गया है उन लोगों के लिए ITR 1 और ITR 2 के लिए। साथ ही यहाँ पर 31 जुलाई तक लोग अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। पहले कहीं ना कहीं बाध्यता रहती थी 31 मार्च तक, फिर से थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाता था, एक्सटेंड करते करते जून तक लेकर के गया था, लेकिन इस बार जुलाई 31 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे सभी लोग। देखिए शेयर मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मच चुका है इस बजट के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर देखा गया है। देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड एंड ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं STT की, तो वो 0.02% से बढ़ाकर यहाँ पर 0.05 करने का प्रस्ताव दिया गया है और इससे कहीं ना कहीं शेयर बाजार जो है वो यहाँ पर काफ़ी भारी तरीके से गिरावट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली है। कल से ही शेयर बाजार में यह हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अब जब बजट पढ़ लिया गया है तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार और गिरने वाला है और इसके लिए सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में भारत के लोगों की अगर बात करते हैं तो लोग जो है वो यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट के से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग नए और नियमों की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी इनकम टैक्स फॉर्म्स है उसे भरना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं रेखा इसमें जिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। मेडिकल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर मोदी सरकार जो है मेडिकल हब बनाने की तैयारी कर रही है, जहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाएगा तो बुज़ुर्गों के इलाज पर फोकस किया जाएगा। बुजुर्गों के इलाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए मोदी सरकार लगातार कई अहम फैसले लेते आई है और आयुर्वेद के नए जो सेंटर्स है उसे खोला जाएगा। जामनगर में WHO के एक नए रिसर्च को भी यहाँ पर और विस्थापित किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा वहाँ पर, ताकि और रिसर्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। शिक्षा के क्षेत्र में फोकस किया गया है, रोजगार के क्षेत्र में फोकस किया गया है, मेडिकल के क्षेत्र में फोकस किया गया है, यात्रा के क्षेत्र में फोकस किया गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर महंगा कुछ होने वाला है तो यहाँ पर शराब और महंगी होने वाली है। यानी कि मोदी सरकार साफ तौर पर चाहती है कि जो शराब है वो कहीं ना कहीं लोग उससे दूर हो और इस वजह से माना जा